एवरीडे लाइफ में कई बार ये बात जताई गई है that it's a man's world. Women are nothing but minorities. Excuse me, whatever happened to equality? उसीलिए आज I've decided to turn things around. जब भी inequality का कहर बढ़ता है तो लेडीज को पैंट स्ट्रैप ऑन करने पड़ते ही है. So you think girls can't do what boys can? Na 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 na. Watch me be the man right here at Antardesi. At Manish Tripathi's store, Antardesi, chatting up his head of designing, Praveen. Hey Praveen, welcome to the show. Hi Pooja, thank you. So tell me Praveen, what are your thoughts about androgyny? Do you think it's sexy? Well, androgyny is something fantasies are made of. मैं अपनी ओपिनियन बताऊँ तो मुझे भी नहीं पसंद कि वुमेन्स को कंट्रोल करके रखा जाए. There's nothing in the world which is more beautiful than an independent woman. Ah, so we are on the same page, darling. Obviously, yes. मुझे लगता है आपके और मेरे कंटेम्प्रेरी ख्यालात काफ़ी हॉलीवुड और वेस्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि डेविड बेकम जो एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है वो भी कहते हैं कि आई लाइक टू सी माई वाइफ इन कंट्रोल, और मैं तो उनके थॉन्ग्स भी पहनना पसंद करता हूँ. आई मीन आई टोटली लाइक टू गिव इन टू हर बीइंग द मैन इन द फैमिली. तो आपके क्या ख्यालात है? क्या आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के कभी थॉन्ग्स पहनोगे? Well, it depends where you are. I wouldn't mind when I'm in a room. Oh, so you mean behind closed doors? It's all okay. It's all good. It's just the perception. So Praveen, आपका स्टोर बहुत ही पॉपुलर है and you've got like a big list of clients. Yeah. Who all exactly do you cater to? If I talk about politicians, Akhilesh Yadav, CM of Uttar Pradesh. Yeah. Mr. Shivpal Yadav. Then we did for Mr. Rajnath Singh ji. Oh. Then we Home did Minister. For Home Minister, obviously, yeah. तो फिल्म स्टार्स की जब बात होती है, who all are your clients? We did the Khan's outfit for Malika. Then we have Ashutosh Rana ji, Anupam Kher ji, Om Puri ji. Wow, that's a long list. Yeah, in fact, the directors also, like we did for Madhur Bhandarkar ji, K.C. Bukhadia ji. When it comes to tantrums, who throws more tantrums, politicians or film stars? Go on, it's only me. You can tell me. You really want me to answer that? Yes. Well, मुझे अपनी जान प्यारी है. I'll say no comments. Oh, look at him get all diplomatic. Well, मेरी daily life में कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है that it's a man's world and I'm getting bullied. But being the devil's advocate and giving men the benefit of doubt, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है that it's a woman's world? I must say quite a lot of time. Really? Yeah. Any one instance that you can pinpoint? Yeah, there are lots of them. One was in college. What happened in college? You got to tell me. Well, that was the first day of college and I didn't know who was my senior and who were not. अच्छा. So there are these group of girls who were sitting all together. And as soon as I entered, they all surrounded me. तो उन्होंने आपको कैसे रिएक्ट किया? क्या उन्होंने आपको बोला कि आपको स्ट्रिक्टीज करना पड़ेगा, या आपको बोला कि अपने अंडरपैंट्स अपने पैंट्स के ऊपर पहन के आओ लाइक सुपरमैन? What did they make you do? ऐसा तो नहीं हुआ फिलहाल, बट जो भी हुआ इट वॉज अ बैड वन. अच्छा पूजा, आप तो हमेशा सबका इंटरव्यू और रैपिड फायर राउंड तो लेते रहते हो. दिस टाइम लेट मी टेक अ रैपिड फायर राउंड. Ooh, okay, I'm scared. Are you as good as a man? I'm as much a man as you are, darling. Let's go for it. Okay, let's see. Okay, so first question is, suppose you are driving and if a traffic policeman bullies you, what would you do that time? Well, actually ये मेरे साथ हो चुका है. मेरे को ये लगता है कि ट्रैफिक पुलिसमैन समझते हैं उनकी जो वर्दी है वो एक ATM कार्ड है और हम लोग ATM मशीन्स हैं, तो हमेशा बेफजूल वो बुली करने आ जाते हैं. In case you didn't know, I'm fighting my own cases in the Mumbai High Court, so I'm pretty well versed with the law. तो उतना आसान नहीं होगा उन्हें मुझे सरेंडर कराना. I will fight tooth and nail and make sure that he doesn't have the audacity to penalize my license. लड़कियों को पार्लर जाना बहुत अच्छा लगता है. अगर आपको कहा जाए सुबह और शाम
आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ वर्क करना है, सुबह से लेके शाम तक स्लॉग करना है। नो हेयर स्पा, नो पेडिक्योर, नो मैनिक्योर। Would you able to do that? क्या है आपके अंदर ये मर्दों वाली बात? Well, Praveen, you think it's easy producing this show? मॉर्निंग से रात तक हम शूट करते हैं, पूरी रात हम एडिट करते हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्टार्ट शूटिंग अगेन। तो आपको लगता है मुझे टाइम मिलता है मैनी, पेडी, हेयर स्पा, वैनिटी के लिए? तो मेरे को लगता है मेरे में बहुत ज्यादा है वो मर्दों वाली बात। ठीक है, मैंने मान लिया आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो, आप सुबह से लेकर शाम तक वर्क करते हो। नो लेट मी चेक हाउ फिजिकली स्ट्रांग यू आर। Excuse me? Yes. How about the arm wrestling match? Ooh, you're challenging me. Yeah. Okay, let's go for it. You better win. Watch me. Secure in his manhood, cause he's a real man. A lover and a fighter and a knocker out. Don't take him for a sucker, cause it's not what he's about. मानना पड़ेगा पूजा, आप उतने ही मर्द हो जितनी आप लेडी हो। You are a balanced personality, I must say. And all the men out there watching this, eat this. Wow. Well, I had a fabulous time being a man, and I hope this interview say I've touched the lives of some women and empowered them. Until next time, this is me, Pooja Mishra, saying, who says it's a man's world? Oh yeah.